we will discuss about elasticity of demand. So, in elasticity of demand, we should have to study about introduction, concept of elasticity of demand, types of elasticity of demand, degrees of price elasticity of demand, determinants of price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand. So, now in introduction जोटी कि आम कहे चाहिदार स्थितिस्थापकता माने इलास्टिसिटी एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन संप्रसारण एवं संकोचन चाहिदार संप्रसारण और संकोचन किपरि सृष्टि हुए दर द्वारा चाहिदार संकोचन संप्रसारण सृष्टि हुए आयर परिवर्तन फल चाहिदार संकोचन संप्रसारण सृष्टि हुए एवं प्रतिस्थापक द्रव्य और परिपूरक द्रव्यर दर परिवर्तन फल चाहिदार मध्य संप्रसारण और संकोचन सृष्टि हुए. Such elasticity of demand explains us the direction of change in quantity demanded as a result of change in price. चाहिदार स्थितिस्थापकता आमको यह सूचौछि जदि दर रे परिवर्तन हुए तेबे चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन हबो. So, this is the law of demand that we have already explained. So, law of demand explains the inverse relationship between price and demand. दर एवं चाहिदा मध्यरे विपरीतमुखी संपर्क जदि द्रव्यर दर वृद्धि पाए चाहिदार परिमाण ह्रास पाइब अन्य पक्षरे दर ह्रास पाइले चाहिदार परिमाण वृद्धि घटिब. So, such inverse relationship we call it as law of demand. Both the variables move in the opposite direction. दुईटी विपरीत मुखी संपर्क. But it does not tell us the magnitude, the amount by which quantity demanded changes with a change in price. So, चाहिदा सूत्र रे आमको जो चाहिदार परिमाण रो केते प्रतिशत परिवर्तन हला ताहा हमें सेतरु जानि परिबा नाही कारण ओनली डायरेक्शन चाहिदार वृद्धि चाहिदार ह्रास दर प्रभाव विषय आम जानुचे किंतु केते प्रतिशत परिवर्तन हला दर केते प्रतिशत परिवर्तन फल चाहिदार केते प्रतिशत परिवर्तन हला ताहा केवल आम चाहिदार स्थितिस्थापकतारू अनुमान करि परिबा. So, the elasticity of demand helps us to measure the magnitude change in demanded due to change in price, or it is the rate at which quantity demanded changes as a result of change in price. जदि चाहिदार जो परिवर्तन होची केते प्रतिशत केते परिमाण परिवर्तन होची ताहा आमे चाहिदार स्थितिस्थापकतारू अनुमान करि परिबा. So, the concept of elasticity of demand meaning, so what is the meaning of elasticity of demand? So, elasticity of demand refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any factors affecting demand for that commodity. अर्थात जदि द्रव्यर परिवर्तन होची कौन कौन उपादान द्रव्यर जो चाहिदा को प्रभावित करुच्ची आउ केते परसेंट परिवर्तन हैला ताहा आमे जानिबा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो. सो अदर फैक्टर्स मीन्स दैट मे बी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इनकम एंड सो अदर फैक्टर्स. सो इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड it is measured, it is a mathematical measurement. यह गाणितिक गोटे पद्धति जो पद्धति रे आमे चाहिदार परिमाण परिवर्तन आमे
स्पष्ट भाव रे जानि परिबा। सो सिंबलिकली ई मीन्स इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिक डिमांड चाहिदार स्थितिस्थापकता। सो द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो चाहिदार प्रतिशतर परिवर्तन डिवाइड बाय जो जेकोसी चाहिदा को प्रभावित करुथिबा उपादान रो प्रतिशत परिवर्तन। सिंस डिमांड varies with the changes in several factors there are different elasticity of demand। जेहेतु चाहिदा अनेक उपादान द्वारा प्रभावित, आय द्वारा प्रभावित, अन्यान्य उपादान द्वारा प्रभावित, रिलेटेड गुड्स जोटा कि आम कहूचे संपर्कित द्रव्यर दर द्वारा प्रभावित, निज द्रव्यर अर्थात जो द्रव्य आम क्रय करछे सही द्रव्य दर द्वारा मध्य प्रभावित। अकॉर्डिंगली द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर ऑफ 3 टाइप्स। ए दृष्टि आम चाहिदार स्थितिस्थापकता को आम 3 भाग में विभक्त करछे। गोटे भाग है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दर स्थितिस्थापक चाहिदा। अन्यटी है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय स्थितिस्थापक चाहिदा। अन्यटी क्रॉस इलास्टिक डिमांड, अन्यान्य संपर्कित द्रव्य द्वारा चाहिदा किपरि प्रभावित होउची ताहा होउची क्रॉस इलास्टिक डिमांड। सो नाउ वी विल ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to the percentage change in price of the given commodity। So गोटे द्रव्यर दर रो परिवर्तन फल रे चाहिदा रे केते परिमाण रो परिवर्तन होची ता होची दर रो स्थितिस्थापकता। So it may be defined as the degree of responsiveness or sensitiveness of demand to a given change in demand। So we mean that expansion or contraction of demand चाहिदार संकोचन और संप्रसारण। चाहिदा केतेबेले वृद्धि पाउची, चाहिदा केतेबेले ह्रास पाउची। दर वृद्धि पाइले चाहिदार परिमाण ह्रास पाइबो, दर ह्रास पाइले चाहिदार परिमाण वृद्धि पाइबो। So such type of negative relationship between price and demand is regarded as price elasticity of demand। So दर स्थितिस्थापकता केवल दर परिवर्तन द्वारा चाहिदा किपरि प्रभावित होता है एवं केते प्रतिशत परसेंटेज। सपोज दर परिवर्तन ला 10% कमिला तो चाहिदा केते परसेंट बढ़िबो। तो जो मेजरमेंट, जो मैथमेटिकल मेजरमेंट इज टू बी measured by the help of price elasticity of demand। दर स्थितिस्थापक द्वारा चाहिदार प्रतिशत परिवर्तन एवं दर प्रतिशत परिवर्तन को आम कैलकुलेशन करि परिबा एवं तार केते माने ग्रेटर देन 1 हो पारे, लेस देन 1 हो पारे, इक्वल टू 1 हो पारे, इनफिनाइट हो पारे, 0 भी हो पारे। तेणु ये सब होची चाहिदार स्थितिस्थापकता जहाँकि चाहिदा द्रव्यर दर द्वारा निज दर द्वारा प्रभावित होता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड वी कैन बी symbolically explained then come to income elasticity of demand। It refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in income of the consumer। The income of the consumer also affects the demand। Income of the consumer also affects the demand।
दैट वी मीन गोटे माने उपभोक्तांकर आय मध्य चाहिदा को प्रभावित करे। उपभोक्तांकर आय जदि वृद्धि पाए तेबे चाहिदार मध्य वृद्धि घटिबो। उपभोक्तांकर आय कम हेले चाहिदा मध्य ह्रास पाइबो। तेणु यह मध्य चाहिदा प्रभावित हुए कौ कारणरू ना आयर कारणरू। आयर परिवर्तन हेले चाहिदार मध्य परिवर्तन हम। या आम कौचे आय स्थितिस्थापक चाहिदा। सो सिंबलिकली ई बाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। So percentage change in income, so what percentage change in demand arises due to what percent change in income. The level of income of the consumer that can affect the elasticity of demand. So चाहिदार स्थितिस्थापकता उपभोक्तांकर आय स्तर पर निर्भर करे। तो से केते परिमाण किणुची तार आय अनुसार किणुची। जदि आय बढ़िला तार सी अधिक जिनस किणव अधिक तार डिमांड क्रिएट हम। जदि आय कमिगला तो डिमांड कम हम नेचुराली। तेणु ये हूँ माने आय स्थितिस्थापक चाहिदा। देन कम टू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिक डिमांड गोटे द्रव्यर दर मध्य चाहिदा को प्रभावित करे। से द्रव्य परिपूरक हो पारे बा अनुपूरक हो पारे बा प्रतिस्थापक हो पारे। प्रतिस्थापक कहले माने सब्स्टिट्यूट गुड्स गोटे द्रव्य बदल रे अन्य द्रव्य उपभोग करा जाए। ए कमोडिटी कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी। परिपूरक बा अनुपूरक द्रव्य कहले दुईटी द्रव्य जॉइंटली कंज्यूम करा जाए। दुईटी द्रव्य एकत्र व्यवहार करा जाए। जेपरी आमे कहचे कार एंड पेट्रोल। द कार रो जदि आमे चाहिदा बढ़िबो ताले जदि कार चाहिदा बढ़ुची कोथ पई ना जदि दर ऊपर डिपेंड करूची। दर जदि कमिला अधिक लोक मान के डिमांड बढ़िबो। कार रो डिमांड बढ़ले से अनुसार पेट्रोल डिमांड बढ़िबो। सो ये होची कोन अनुपूरक बा परिपूरक। गोटे द्रव्य रो चाहिदा अन्य द्रव्य चाहिदा बिना पूर्ण हो पारिबो नाही। अनलाइक कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रतिस्थापक द्रव्य। चा और कॉफी जोटी कि आम कहे टी एंड कॉफी। सो डिमांड ऑफ टी इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी। तो दर रो जो कॉफी रो दर चाहिदार माने कॉफी रो दर चार चाहिदा को प्रभावित करे। सपोज चार दर बढ़ीगला। चार दर बढ़ले कौन हम ताल लोक मैंने अधिक कॉफी पीबे कारण कॉफी रो रेट जहाँ अच्छी लोक मैंने माने कंपेरेटिवली माने कॉफी इज चीपर देन टी। तो लोक मैंने अधिक कॉफी पीबे। सिमिलरली जदि कॉफी रो रेट बढ़ीगला लोक मैंने अधिक चा पीबे जेहेतु टी इज चीपर देन कॉफी। So such type of measurement of related goods affecting demand is recognized as cross elasticity of demand. So now degrees of price elasticity of demand, or we call it types of price elasticity of demand. दर स्थितिस्थापकतार विभिन्न दिग बा विभिन्न प्रकार। तो डिमांड फॉर द कमोडिटी इज अफेक्टेड डिफरेंटली टू गिवन चेंज इन इट्स प्राइस। तो गोटे उपभोक्ता चाहिदा दर द्वारा विशेष भाव में प्रभावित। दर परिवर्तन चाहिदा को किपरि प्रभावित करुछि। सो दैट वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द हेल्प ऑफ द price elasticity of demand. Price elasticity demand means the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. So now I will explain
EP percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Let for example, suppose price changes by 10%. As a result of it, quantity demanded changes by 30%. So, now what is the value of price less demand? The value of price less demand, value of price elasticity of demand is equal to EP is equal to, so change in quantity demanded, that is 30% divided by 10%. So, is equal to 3%. So, now demand changes by 3%. So, that percentage is calculated with the help of this method. So, price elastic demand, so elastic demand may be greater than 1, here elastic demand is greater than 1, may be less than 1, may be equal to 1, may be infinite, may be equal to 0. So, these are the various degrees of a price elasticity of demand. Now, we have go through in detail. So, there are 5 degrees of a price elastic demand. So, perfectly elastic demand, degrees of price elasticity of demand. So, number 1 is a perfectly elastic demand, perfectly elastic demand. So, perfectly elastic demand संपूर्ण स्थितिस्थापक चाहिदा. It means when a negligible change in price leads to an infinite change in quantity demanded, or no change in price leads to an infinite change in quantity demanded. The percentage change in price is very negligible, अति न्यून. जदि अति नेग्लिजिबल चेंज हुए ताले चाहिदारे असीम परिवर्तन घटे ताको संपूर्ण स्थितिस्थापक चाहिदा कहा जाए. तो द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड इज हियर इनफिनाइट, असीम. तो नो, so that we can measure with the help of table and diagram. So, now here is the price in rupees, quantity demanded, in units. So, now price almost negligible, price change is almost negligible. Suppose
30 rupees, 30, 30, no change. Demand changes infinitely, 100, 200, 300, etc. Here, so price changes remain unchanged, price remains unchanged, but quantity demanded changes infinitely. तो ये हूँ दर अपरिवर्तित होची किंतु चाहिदार परिमाण रे असीम परिवर्तन होची ताले चाहिदार स्थितिस्थापकतार मूल्य इनफिनाइट बा असीम. सो नाउ वी ड्रॉ इन ए डायग्राम. Now, x axis, y axis, quantity demanded, here is the price, P and D. Here is price is 30, $100, 200, 300 and so on. So now in OX axis we measure quantity demanded, चाहिदार परिमाण. OY axis measures price. OY axis रे आमे दर नैचे द्रव्य दर नैचे. PD होची चाहिदा रेखा डिमांड कर्व. PD डिमांड कर्व. It is horizontal and parallel to OX axis. PD चाहिदा रेखा या OX अक्ष सहित समांतराल बा आनुभूमिक अर्थात दर ये स्थिर चाहिदार परिमाण र वृद्धि घटुची. OP दर रे चाहिदा र परिमाण होची 100 यूनिट्स और 30 प्राइस 30 रुपीज रे बर्तन से 100 यूनिट्स रे रही से 30 रुपीज प्राइस रे 200 यूनिट्स परचेज करुचे से 30 रुपीज रे मध्य आमे 300 यूनिट्स परचेज करुचे. सो आवर डिमांड चेंजेस इनफिनाइटली. डिमांड चेंजेस इनफिनाइटली. डिमांड changes infinitely with no change in price. With no change in price, price रो चेंज होनी, दर परिवर्तन किछि हो नाही किंतु चाहिदार परिवर्तन होछि. इट इज ए वेरी स्पेशल केस कारण जदि आमे दर कौन सी परिवर्तन हो नाही चाहिदार असीम परिवर्तन होची ताको आमे कहबा संपूर्ण स्थितिस्थापक चाहिदा. इन सच ए केस द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल आनुभूमिक. तो इठी आमे देखिबा मैथमेटिकल देखिबा. सपोज एग्जांपल नबा द परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस. तो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वी मीन तो केते परसेंट रे हमरो चाहिदार परिवर्तन होईची. चाहिदार परिवर्तन असीम होईची. सपोज हम देखिबा EP is equal to suppose 20%. Suppose 20%. 20%. तो दर कौन सी परिवर्तन होची 0 किसी परिवर्तन 0. तो इटी वैल्यू विल बी इनफिनाइट. वैल्यू विल बी इनफिनाइट. 20 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इनफिनाइट. इटी होची संपूर्ण स्थितिस्थापक चाहिदा. इटी होची दर परिवर्तन हो नाही चाहिदार परिमाण रे असीम परिवर्तन घटुची. तेणु यह होची संपूर्ण
स्थितिस्थापक चाहिदा. Then we come to second degree, we call it as perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand. So second degree is perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand, संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा. So we mean when a change in price of a commodity leads to no change in quantity demanded. यदि द्रव्यर दर रे परिवर्तन फल रे चाहिदा कौन सी परिवर्तन न घटे ताकू आमे संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा कहबा. So in this case the elasticity of demand is equal to 0. माने चाहिदार स्थितिस्थापक होउची शून्य, no change in quantity demanded as a result of change in price. So the demand curve will have a vertical shape and will be parallel to y axis. कारण एठार होची दर परिवर्तन घटुची, दर वृद्धि पाउची बा दर ह्रास पाउची, चाहिदार कौन सी परिवर्तन घटु नाही, remains unchanged. So the example is salt, matchbox, candle. ए सब दर परिवर्तन घटले मध्य चाहिदार कौन सी परिवर्तन घटे नाही. सो जतिक अमाउंट किनिबा कथा आमे सेतिक अमाउंट किनिबा, दर बढ़ू बा दर वृद्धि पाऊ किबा ह्रास पाऊ, उपभोक्तांगर चाहिदार कौन सी परिवर्तन घटे नाही. तो now we will explain the perfectly inelastic demand with the help of the table and diagram. So now price changes and quantity demand remains unchanged. Here is the price in rupees, quantity demanded in units. So here price changes, suppose price 20 rupees, 30 and 40. So price here changes, but the quantity demanded remains unchanged, 100, 100 and 100, no change. So price may rise or price may fall, but quantity demanded remains unaffected. दर कमिले दर बढ़िले चाहिदा प्रभावित नुही, कारण इठी चाहिदार स्थितिस्थापक होउची शून्य, कौन से परिवर्तन हो नहीं. सो द चेंज इन प्राइस लीड्स टू नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. द्रव्यर दर परिवर्तन द्वारा चाहिदा कौन से प्रभावित हुए नहीं, तेणु यह संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा कहा जाए. सो नाउ it is diagrammatically explained, which will be better to understand. OX axis or Y axis. OX axis measures quantity demanded, and O axis measures price. Here is demand curve, Q, here D. QD is the demand curve.
Q is the demand curve which is vertical straight line and parallel to OY axis. यह OY अक्ष सहित parallel समांतराल. यह होची दर परिवर्तन फल रे चाहिदा कौन सी परिवर्तन घटू ना. आम देखा Q मीन्स आम देखा 100 नो चेंज. हियर इज प्राइस 20 30 then got 40. Price may increase, demand is unaffected, that is OQ. When price rises from 20 to 30, our demand is OQ, no change. When price falls from rupees 40 to rupees 30, again it falls from 30 to 20, demand is OQ, no change. So here is elastic demand is equal to 0. Elastic demand is 0 means it is a, in case of special case, that is salt, matchbox, candle, etc. In such a case, demand does not change even though there is change in price. इट हूँ चाहिदार कौन परिवर्तन होनी जदियो द्रव्य दर वृद्धि पाँच बा ह्रास पाँच. तेणु आम गोटे एग्जांपल ना मैथमेटिकल एग्जांपल. सपोज डिमांड चेंजेस बाय 0 किसी चेंज होनी, नो चेंज, but price changes by 20%. So what will the value of elastic demand? That is EP is equal to percent change in quantity demanded divided by percent change in price. Quantity demanded is 0, price changes by 20%, so is equal to 0 by something is equal to 0. So it is the demand curve is a vertical straight line. Demand curve is a vertical straight line. Vertical straight line. उल्लंब आकृति. उल्लंब आकृति कारण दर परिवर्तन द्वारा चाहिदा कौन सी भाव में प्रभावित होना. दर वृद्धि घटू बा ह्रास घटू चाहिदार अपरिवर्तित होची, चाहिदार कौन परिवर्तन होना. तेणु यह कहवा में संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा. नेक्स्ट कम टू रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड. थर्ड डिग्री इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड. relatively more elastic demand. अपेक्षाकृत अधिक स्थितिस्थापक चाहिदा. सो अपेक्षाकृत अधिक स्थितिस्थापक चाहिदा अर्थ होची द डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन द परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंट चेंज इन प्राइस. जदि द्रव्यर दर जी परिवर्तन होची द्रव्यर चाहिदारे जदि अधिक परिवर्तन हुए तेबे आमे ताहाकु कहिबा अपेक्षाकृत अधिक स्थितिस्थापक चाहिदा. एग्जांपल व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 20% डिमांड इंक्रीजेस बाय मोर देन 20%. So 50% more than 50%. So it is called relatively more elastic demand. So now we see with the help of the table.
जदि द्रव्यर दर रे कम परिवर्तन चाहिदा अधिक परिवर्तन घटे ताकू अपेक्षाकृत अधिक स्थितिस्थापक चाहिदा कहवा ताले प्राइस इन रुपीस quantity demanded in units so here price falls 22 rupees 22 10 quantity demanded when price falls quantity demanded will increase there are 100 to 200. So, here price falls from rupees 20 to rupees 10. As a result of it, the quantity demanded increases from 100 units to 200 units. So, here the elasticity of demand is greater than 1. Suppose price changes by 20%, quantity demanded changes by more than 20%, say 50%. So, what will the value of elastic demand? So, now change in quantity demanded, the percent change in quantity demanded divided by percent change in price. The quantity demanded is 50%, price changes by 20% is equal to 2.5%. 2.5 here is if is greater than 1. तो एक रु अधिक है ये कारण जिते बड़े द्रव्यर दर रे कम परिवर्तन होची चाहिदार परिमाण रे अधिक होची तेबे चाहिदार स्थितिस्थापकतार मूल्य एक रु अधिक तेणु साधारणतः आमे देखिबा लग्जरियस गुड्स कंफर्टेबल गुड्स जोटा कि आमर टिके बा जो आमे कहूचे ड्रेस हो देन कम टू ऑर्नामेंट्स हो किंबा आमर कॉस्टली आइटम्स हो जदि आमे टिके दर रे कम परिवर्तन होची चाहिदार अधिक परिवर्तन होची तेणुक इठी होची चाहिदार स्थितिस्थापकतार मूल्य एक रु अधिक. सो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ द हेल्प ऑफ द डायग्राम. आमे याकू रेखाचित्र रे उपस्थापन करिबा. OX axis, OY axis, quantity demanded, here is the price. So, now the demand curve is a flatter one माने जो कि आम फटका बेले कौचे बा इटा होची टिके फ्लैटर डी द डिमांड कर्व here is 20 price falls 20 to 10 quantity demanded increases from 100 to 200. Here is delta Q, here delta P. So, now
प्राइस फॉल्स ₹20 to 10 दर कमिला 20 टंका रु 10 टंका है जहाद्वारा कि चाहिदा परिमाण बढ़ला 100 टंका रु 200 टंका 100 यूनिट रु 200 यूनिट सो यह द्वारा होची जे चाहिदार परिमाण रे अधिक परिवर्तन घटुची दर रे परिवर्तन कम घटुची तो डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी डेल्टा मीन्स चेंज परिवर्तन ताले हम देखिले जदि द्रव्यर परिमाण रे जदि अधिक परिवर्तन होची दर रे कम परिवर्तन होची ताकू आमे कहिबा अपेक्षाकृत अधिक स्थितिस्थापक चाहिदा अपेक्षाकृत माने जनरली डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस तो इट होची ईडी इज ग्रेटर देन 1 हियर द वैल्यू ऑफ इलास्टिक डिमांड प्राइस इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1 तो साधारण आम देखा माने एग्जांपल होची कंफर्टेबल गुड्स luxurious goods these are the various examples in which the demand is said to be relatively more elastic यह होची अपेक्षाकृत अधिक स्थितिस्थापक चाहिदा then come to relatively less elastic demand then come to relatively fourth one is relatively less elastic demand relatively less elastic demand. So, relatively less elastic demand we mean when the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price. So, demand for such a commodity is said to be less elastic or inelastic. तो जिते बड़े कौन सी द्रव्यर दर रे कौन सी द्रव्यर दर रे कम परिवर्तन द्रव्य दर अधिक परिवर्तन फल चाहिदार कम परिवर्तन घटे आम ये देखा माने डिमांड इज लेस इलास्टिक मीन्स चाहिदार परिवर्तन होची कम दर परिवर्तन होची अधिक द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस तो ये देखा एग्जांपल आम नहीं पारिबा suppose quantity demanded changes by 20% say quantity demanded changes by 20%. Suppose price changes by 10%. Here is जदि हमें प्राइस चेंज इट इज मोर इलास्टिक डिमांड रिवर्स द सेम आर ठीक अपोजिट आम करदे यहाँ हूँ 10% करवा एटा 20% करवा जदि प्राइस चेंज 20% जदि ये दर अधिक होगला चाहिए कम है जदि हम देखा माने ईपी इज परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड परसेंट चेंज इन प्राइस परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10% परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 20%. So, here the value of elastic demand is less than 1 that is 0.5. So, here 0.5 means the value of elastic demand is less than 1. So, it होची द्रव्यर दर रे परिवर्तन होची अधिक चाहिदार परिवर्तन होची
कम ताकू आम अपेक्षाकृत कम स्थितिस्थापक चाहिदा कहवा. सो इन सच ए केस the value of elastic demand is less than 1 and the demand curve is steeper. यह हूँ चैप्टर आकृति, चैप्टर माने steeper. So now we will explain it in the table and diagram. Here is the price in rupees, quantity demanded in units, एक नौचे एटा टंकार नौचे. इट प्राइस चेंज है 20 रु 10 है, प्राइस कमिला, प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ₹20 to ₹10. As a result of it, quantity demanded increases from 100 to 200. Suppose 100 to 120. 120. So now what is the value of elasticity of demand? So it is less than 1. Now x axis measures quantity demanded, y axis measures price. इठी आम x अक्षर नहींचे चाहिदार परिमाण, y अक्षर नहींचे द्रव्यर दर नहींचे. इठी हूँ डिमांड कर्व स्टीफर. Here is 20, 10, 100, 120. So here is delta P, here is delta Q. Delta Q is less than delta P. So due to demand curve is steeper, demand curve is steeper. Steeper means जोटा कि आम कहे चैप्टर आकृति, कारण द्रव्यर दर रे अधिक परिवर्तन होची, हियर द्रव्य दर अधिक परिवर्तन होची, चाहिदा कम परिवर्तन होची, ताको आम कहबा रिलेटिव लेस इलास्टिक डिमांड. सो जनरली नेसेसरी गुड्स, नेसेसरीज रे डिमांड होची लेस इलास्टिक. दर अधिक परिवर्तन हेले मध्य चाहिदा कम परिवर्तन, कहीं ना लोक मैंने जी किणवा कथा से किणवे, कारण दर जदि अधिक परिवर्तन है लोक अधिक किणी पारे ना, कम किणवे, कारण यहाँ बेयर नेसेसरी जी रिक्वायरमेंट अच्छी से रिक्वायरमेंट आवश्यकता जी अच्छी से किणवे, ताठू अधिक किणवे, दर जिते कमिले से अधिक किणवे ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव लेस इलास्टिक डिमांड. नाउ थर्ड लास्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. Unitary elastic demand. So when the demand is said to be unitary, when there is equiproportional change in quantity demanded as a result of change in price. Equiproportional, the percentage change in price is equal to the percentage change in quantity demanded. So here its value is always equal to 1, the value is always equal to 1. So percentage, suppose 100%, price changes by 100%, then quantity demand changes by 100%. So elastic demand will be 100% divided by 100% is equal to 1. So it is unitary, माने unity, its value is unity. Echo. So now we will explain it in the table and diagram. So now table,
here is price in rupees, quantity demanded in units. So, when price 20, 10 falls, quantity demand increases 100 to 150 units. Here the change in price almost the same as change in quantity demanded. So, the curve is like a rectangular hyperbola, the demand curve is a rectangular hyperbola. X axis, y axis, quantity demanded, here is the price, d the demand curve which is a rectangular hyperbola, here is the 20, 10, 100, 150, here is delta q, here is delta p. So, here delta p is equal to delta q. So, percent change means 100% is equal to 100%. So, elastic demand value of p is equal to 1. So, dd demand curve is a rectangular hyperbola. So, the demand curve dd is the rectangular hyperbola, it does not touch both axes, as price changes by 100%, quantity demanded also changes by 100%. So, this is all about the meaning, then come to concept, then come to various types of elastic demand and various degrees of price elastic demand. I feel that you might have understood this elasticity of demand, the concept, the types and degrees of price elastic demand. Thank you all.